Everybody keep your cameras on. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yeah. Timely join kariye. Join on time, huh? Good morning, ma'am. Good morning. So, what is the agenda today? आज का agenda क्या है? Is there any- Ma'am, assignment दिखा। किसी को प्रेजेंटेशन करना है आज? सबका हो गया था? मैम फर्स्ट टॉपिक का हो गया था, सेकंड मैम मेरा रह गया था पहला टॉपिक। किसका रह गया था? You can start. Anyway, important है, आपका assignments है, and you are getting asking for 20 marks. तो जिसका भी रह गया था, you can start right away. मैम मेरा रह गया था, स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल स्टार्ट करिए। ओके मैम। न्यू टॉपिक पे जा रहे हैं आज। व्हाट इज प्रपोजल? अगर ये स्टार्ट। Good morning, everyone. Today I talk about the history of Rahul Bajaj. Rahul Bajaj is an Indian billionaire businessman. He is the chairman of the Indian conglomerate Bajaj Group and a member of parliament. He was born to Kamal Nayan Bajaj and Savitri Bajaj at 10th June. कमल नायन नहीं, कमल नयन। Kamal Nayan. At 10th June 1938 in Kolkata. He was married to Rupa Bajaj from 1961 till her death in 2013. He has two sons, Rajiv Bajaj and Sanjeev Bajaj, who are in the management of the Bajaj Group. He also has a daughter named Sunaina Kejriwal. He is the grandson of Shri Jamnalal Bajaj, who was Indian freedom fighter. In 2001, he was awarded Padma Bhushan. He was also awarded Legion of Honor by the French government. Bajaj first completed his honors in economics from Delhi University. After that, he pursued law from Bombay University. He then went on to complete his MBA from Harvard University, USA. After completing his education, the first job he got was the major responsibility of CEO of Bajaj Group in 1968. Under his lead, Bajaj Group saw a major turnover in a business and it became a big brand in automobiles. In 2001, there was a great decline in the stock market, also due to the merging of Honda with Hero Groups. It was that time Bajaj launched Bajaj Pulsar. After automobiles, Bajaj target other markets too. He launched Bajaj Finance Group and Bajaj Home Appliance, and he also in steel manufacturing. Bajaj became president of Confederation of Indian Industry in 1979, and then in 1999, he also became president of Society of Indian Automobiles Manufacturers. Bajaj was also the chairman of Development Council for Automobiles and Allied Industries, also from 1968 to 1989. He was the chairman of Indian Airlines. Some of the name of Bajaj Group of Company are like Bajaj Finance Solution Limited, Bajaj Electricals, Bajaj Holding and Investment, Bajaj Auto Limited, Bajaj Customer Care etc. Thank you, ma'am. All right. Anybody else? मैम ये सेकंड टॉपिक था मेरा। मैंने राहुल बजाज से मैं बोल रही थी ये सुभाष चंद्र। आपको you want to present? Yes, ma'am. Yeah, okay. Fine. First of all, good morning to all of you. I am Mansi Shrivastava and now I'm going to tell you something about Subhash Chandra. First of all, we are knowing about who is Subhash Chandra.
Subhash Chandra, founder and chairman of SL Group NTT. Subhash Chandra was born on 30th November 1915 in a small village called Adampur in Hisar district in Haryana. He was in a joint family where his grandfather and his two brothers were running the business together. His grandfather had formed the company in 1926 under the name Ram Gopal Prasad, based on a business started by his grandfather and one of his other grandfathers. The firm carried business as food grain commodity merchants and traditional bankers. They would lend money against commodities, sold in various cities and had branches all over in Punjab. Subhash was attentive to his studies and after passing his 10th standard got admission to Punjab Engineering College in Chandigarh. 1 year earlier, then would be the Subhash was also attentive to his study and after passing his 10th standard got admission into Punjab Engineering College in Chandigarh. 1 year earlier than would be the norm. He had only been in college some 10 months when he received a postcard from his grandfather which read something like he could not afford any mortgage expenses of 300 a month which he sent regularly. He need to get the money from somewhere else, otherwise he come to home. He came home in 1967. He was 17 years. In the first 6 months, he got back. He worked with his grandfather to clean up the maze. It was a very difficult time for the Subhash Chandra. Business standing and everything was in short supply. After this, after being back for 6 months, he was frustrated as there was a little money coming into the family. And after that, he he decided to uh, try something else. And then he asked to his grandmother for some money, but he doesn't accept his proposal. And but he convinced him that we are already in debt over 6 lakhs. So he told him that if he would give him permission, his journey really started then, and there has no been backing. There has been no looking back. The two older brothers of Subhash, three younger brothers helped him with the Dale plan before the after day school. The youngest helping him to help him. He faced a lot of challenges. It was very difficult in the traditional sense. The agriculture commodity markets, mandis, as he told them, were controlled so that the trader could not feel the farmers who brought his produce to him. After that, life was very still complicated for Chandra household. It was still a joint family of his grandfather, his grandfather's younger brother, and nephew, and his family, bringing the total of around 40 people. And after a few years, Subhash came up with the idea not only to pay back the debt, but to create some capital to grow the business. He suggested to Food Corporation of India, that is FCI, that gets surplus crop left over after the occasion should be sold to the army. Then after in year 1972, India with a bumper crop with little or no strong facilities where the crops were grown. And the old family company of Ram Gopal Inder Prasad was reconstituted as Subhash Chandra and his brother Lakshmi to the name Subhash Chandra Lakshmi Narayan, which is now called SL. From this point of, there was no looking back. The food grain business and the stronger business introduced him to the plastic business and what plastics are used for. And the achievement of Subhash Chandra was that Subhash has uh, Subhash has established in 1991, wondering that it is alternative to get entertainment closer to the homes, the people, and that how TTV was started in October 1992. Subhash has also put his talent and resources to get effect in the charitable activities. He was, for example, established Salim Trans Salim and for the women
government through multimedia to provide access to quality education for the distance and open learning. He is also the chairman of Kisan Vidyalaya and for rural to educate the people of rural and tribal India. The foundation India's largest Mansi, you're breaking. You're maybe an internet problem. So let us start. Is there anybody else who would like to say something today? Hello? Yes, ma'am. The rest of the students, please keep your cameras on. This is something which is your protocol. Yes. Who would like to continue? Please make your presentation short, like you can concise your presentation so that we know that you know the content. Ma'am, I also made a presentation. Yeah, okay. Can I share the screen? Yeah. This is it would have been better had you made the PowerPoint presentation instead of reading it from the text. It is Yes. always PPT presentation is always good because it helps you to understand better also. Right. Yes, and this is Ritik Sharma. Yes, ma'am. Okay, start. One minute. Manchi Shrivastava, are you there? Yes, ma'am. Okay. So you have learned the story, you have not learned, you have read the story of Ma'am, I Subhash have Chandra. also learned this story, all this Fine, fine. about the Subhash Chandra. Yeah, okay. About Subhash Chandra, what is the difference did you found in Rahul Bajaj and Subhash Chandra? Ma'am, Can you Subhash can you Chandra- can you can you compare and contrast both the personalities? Yes, ma'am. Subhash Chandra, Rahul Bajaj was only focused on his business quantity, but Subhash Chandra, Oh, you have internet problem, right? Okay, what did you learn from Subhash Chandra? क्या ma'am, सीखा? ma'am, he faced a lot of challenges on his life. Like I told that he was previously he was worked in a maze, Hmm. and he couldn't get higher education due to due to his family condition were not good, so that's why he is not getting a higher education, but still they faced a lot of challenges and great success, and he is very helpful to our country because he is a charitable for the lot of children like tribal in rural area and also in tribal India. Okay, fine. Yes, Ritik, start. Okay, ma'am, thank you. Wait a minute, ma'am. Screen. Ma'am, visible हो रहा मैम screen? चलो तुम प्रेजेंटेशन ऐसे ही दे दो, प्रॉब्लम हो रहा है तो. Yeah, okay. Hello, Ritik, we can see your screen. Unmute yourself first.
Ritik, we can't hear you. Ma'am, hello. Ritik, start. Okay, ma'am. Uh, 1 minute. बैठ जाता हूँ. Start. And I'm here to present our story on Rahul. क्या हुआ? Hello. Can you get my voice, ma'am? Yes, start. About Rahul Bajaj. Rahul Bajaj is a chairman of Bajaj Auto. He was born on 30 June 1938 in Kolkata. Rahul's grandfather Jannaral Bajaj founded the Bajaj Group in 1926 and his father Kamal Nayan Bajaj succeeded him in 1942. Kamal Nayan started the procedure to Bajaj Auto. Within 3 years, he expanded into a new business, including cement, electrical appliances, and scooters. Rahul Bajaj graduated from St. Stephen College in Delhi 1958 and also earned a degree in law from Bombay University. Then he went to the pursuit of MBA from Harvard Business School in the US and became CEO of Bajaj Auto in 1968. Rahul Bajaj's journey as an entrepreneur. Rahul Bajaj became a part of his father group as deputy general manager. He was in charge of key departments in the company like marketing, accounts, purchase, and audit, etc., under the guidance of Naval K. Firodia, CEO of Bajaj Auto. Rahul learned the nonsense of business. Later, Firodia and the Bajaj parted ways. After his father passed away in 1972, Rahul was appointed the What do managing you mean director. by nuances of business? Ma'am, he learned about the business and what is types of business like that. Hmm. The skills of business, the Yes, fine parts of business. yes, ma'am. What is required to become a businessman? Ma'am, it requires good management Hmm. and a good supporter to also to increase her marketing. Okay, continue. Yes, ma'am. Uh, After his father passed away in 1972, Rahul was appointed the managing director of Bajaj Auto. Under his leadership, the company witnessed tremendous growth. What Rahul do you mean? Bajaj, What do you mean by tremendous growth? ma'am, tremendous growth means simultaneously growth in uh, मैम घट जाना ग्रोथ का ऐसा घट जाना? नहीं सॉरी बढ़ जाना अरे क्या? Are you confused? या मैम Tremendous मतलब बहुत ज्यादा. यस यस जो भी मैंने पहले भी कहा था, whatever words you are writing, it is also your learning experience, self thought, self taught, ये आपका self work है ना, so you Yes, are also learning it. No, tremendous मतलब बहुत ज्यादा. Catch up with the dictionary and learn the new words. This will okay. always help you, and these words are very common. The company witnessed tremendous growth. It means the company saw a lot of growth. And Yes, business term में the company saw black, मतलब बहुत ज्यादा growth, yeah ma'am. profit. Okay ma'am. Continue. Rahul Bajaj built the firm in the 1970s and 80s. He grew the company revenues to join the billion-dollar club. It was through his initiative that Chetak and Chetak and Bajaj Super. Chetak and Bajaj supermodel rose to the prominence in the Indian market. Originally based on Italian Vesa Sprint, Chetak was an affordable means of transportation for millions of Indians for decades, and it's remembered as What do you mean Mara by Bajaj. Chetak was an affordable means? का मतलब क्या हुआ? Ma'am, Chetak was an affordable means of transportation for millions of Indians. Hmm. Mm,
इसका तो ये मतलब मैम ये ज्यादा मतलब मिलियंस में ये चेतक अफोर्ड कर पाता था सबको, ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। मिलियंस ऑफ पीपल अफोर्डेड, मतलब कि वो लोग, इट वाज नॉट वेरी कॉस्टली, सो बहुत लोग इसको अफोर्ड अफोर्ड कर सकते थे। सकते थे। यस मैम। डेकेड्स का मतलब क्या होता है? टिकट्स मैम आई थिंक सो, नहीं आई एम कंफ्यूज नाउ, कैन यू रिमाइंड मी? ऋतिक, या डेकेड्स का मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 इयर्स। पीरियड ऑफ 10 years, ओके मैम। ठीक है, यस मैम, मतलब एंड हाँ, 10 इयर्स के पीरियड को कहा जाता है डिकेड्स। डेकेड। अगर एक है तो 10, मोर देन 10 तो डेकेड्स। A period of 10 years is called a decade. Similarly, like 7 days in a week, यस मैम, 10 years, decades. ओके मैम। ठीक है। हाँ, एंड इट इज रिमेम्बर्ड एज हमारा बजाज। हम्म। Yeah, ma'am. Bajaj sales hit a low point around 2001 after market liberalization. So Japanese competitors like Honda, Yamaha, and Suzuki introduced new motorcycles and changed the dynamics of India's market. But it soon recovered from the loss with effective marketing and promotion. Bajaj Auto reinvented itself and came up with Bajaj Pulsar motorcycle. In Hmm. 2008, he split Bajaj Auto in the three units: Bajaj Auto Finance Company, Bajaj Finserv, and a holding company. His sons are now managing the day-to-day affairs of the company. Hmm. Rahul Bajaj has been the president of the Confederation of Indian Industry (CII) and the Society of Indian Automobile Manufacturer (SIAM). Hmm. Awards and recognitions of Rahul Bajaj. He was appointed the chairman of Indian Airlines in 1986 and was awarded Padma Bhushan in 2001. In June 2006, Rahul Bajaj was elected to Rajya Sabha from Maharashtra. In 2005, he resigned as chairman. His son Rajiv became the group managing director. In 2013, the Bajaj family won the Distinguished Family of the Year award. They won the award। What do you mean by distinguished? मैन सबसे सबसे ज्यादा ग्रोथ होने वाली फैमिली, आई थिंक सो। हाँ चलो, distinguished, the best family of the year. यस मैम, they won the award for dedicating their wealth and time for the public goods. The family runs schools like Balwadis, vocational and technical training institution, which include, बालवाड़ीज, yes ma'am, बालवाड़ी चिल्ड्रंस स्कूल, yes, बालवाड़ी, ठीक है। which includes adopting ITIs. They train rural women in tailoring and embroidery. They have set up hospitals and rural development programs under the umbrella of Janki Devi Bajaj Gram Vikas Sanstha. Hmm. Rahul Bajaj's fearless approach. He is known in corporate circles as the man who does not mince words when it's come to any matter of national interest or echoing corporate India's woes. मैम, मिन्स का मतलब बताइए। हाँ वही मैं भी पूछना होता है, कोचिंग क्या होता है? तुमने बनाया है ना, तो तुम बताओगे ना। मैंने इसका मैम इसका मैंने मीनिंग फाइंड नहीं किया एक्चुअली। मिन्स का मतलब पूछ रहे हैं। किसका मैम? मिन्स, नॉट मीन्स वर्ड, छोटे मोटे मतलब एक मिनट, द मैन हु when you're talking about mincing, he does not mince words. It means he talks directly. He डायरेक्टली। is talking directly in a very honest manner, without worrying about offending someone. किसी को offend किए बिना, किसी को नाराज किए बिना, किसी को hurt किए बिना बात करना. She Yes. minces no words in stating her opinion. It means she is very particular about saying I'm anybody. मतलब मैंने sentence बनाया है. It Okay. means he is talking politely, he's talking honestly, and he does it with utmost care so that he does not hurt anybody. Yeah, ma'am. On November 30, at an awards event organized by the Economic Times in Mumbai, Rahul Bajaj said that he was born anti-establishment.
Rahul Bajaj has always been regarded as spoken, and his friends call him fearless. In the 1970s, when Italy's Piaggio didn't renew Bajaj's license, he began manufacturing his own brand of scooters with names like Chetak and Super. Under Indira Gandhi, the government regulated production under a system called the License Raj. Owing to the restrictions, buyers had Owing to the, owing का मतलब क्या होता है? मैम वो उसका मतलब पालन करना, रेस्ट्रिक्शन। पालन करना नहीं, हाँ, owing मतलब कि के वजह से, restrictions के वजह से, you are at home owing to the lockdown के वजह से, ठीक है? ये वजह से। ओके हम्म, मैम। Buyers had to book and wait for years to receive scooter. However, Rahul protested against the license charge. In an interview, Rahul said that if he had to go to jail for production of a commodity that most Indian needs, he didn't mind. What do you mean by commodity? And commodity, Hmm. ma'am, means extra जो क्वांटिटी देते हैं ना, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ गुड्स का। नहीं, कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, कोई भी किसी भी चीज को। हाँ, वो ये कहते हैं कि उसको उनको जेल भी जाना पड़े अगर प्रोडक्शन के लिए कोई ऐसी चीज को, कोई ऐसी कमोडिटी को कि जो मोस्ट इंडियंस नीडेड, उसके लिए वो तैयार थे, ही डिड नॉट माइंड। कोई चीज जो लोग, आम लोग जिस चीज की जरूरत होती है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए उनको जेल जाना भी पड़े तो उसके लिए ही डिड नॉट माइंड, ही वुड नॉट माइंड। यस मैम। तो कमोडिटी का मतलब होता है कोई चीज, कोई गुड, या तो दीज आर वेरी कॉमन वर्ड ऋतिक, विच जो भी वर्ड नहीं आता, ऐसा नहीं करें कि जो मेरे लिए कॉमन तुम्हारे लिए अनकॉमन हो गया है, डेकेड्स एंड ऑल दैट। कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ कि जानते होगे, बट नो, आपको हम बोल रहे हैं कि अगर एक पैराग्राफ में इफ यू आर गेटिंग 10 वर्ड्स, बी हैप्पी दैट यू आर लर्निंग 10 वर्ड्स। यस मैम। एक वोकैबुलरी, अपना पर्सनल वोकैबुलरी बनाइए, अपना डिक्शनरी बनाइए। एंड दीज कॉमन वर्ड्स, आप बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं तो वोकैबुलरी तो अपडेट करना बहुत जरूरी है ना। यस मैम। बीकॉम करें या बीबीए करें, बीसीए करें, वट एवर, टू स्पीक इंग्लिश यू मस्ट नो इंग्लिश। जानोगे तब तो बोलोगे। यस मैम। ओके, कोई वर्ड जो नहीं है पहले अंडरलाइन कर लो। इट मे टेक टाइम। प्रेजेंटेशन आपको कल थोड़ी देना था, बनाना है, टेक योर टाइम, टेक 2 वीक्स 3 वीक्स कम से कम। देखो, एजुकेशन में देयर इज नो शॉर्टकट टू एजुकेशन। टेक योर टाइम, समय लगे लेकिन जो चीज तैयार होगी वो रहेगी A1। यस मैम। तो कहीं से भी कोई तुमको कोई पूछ ले तो आप फट से जवाब दे दे यस आई नो। और ये अगर कुछ हमने वर्ड यूज किया है, कोई पूछ दिया कि क्या मतलब है और नहीं बोल पाए तो इट इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द स्टूडेंट कि मैं ही लिखा हूँ और मुझे ही नहीं पता है। ठीक है, समझ रहे मैम। हाँ, चलो। On November 30, he triggered a sharp debate on Twitter after he said that there is an atmosphere of fear in the country and people are afraid to criticize the government. ट्रिगर का मतलब वही होता है, ट्रिगर अ शार्प डिबेट, और स्टार्ट किया ट्रिगर। ट्रिगर का आप गन में जानते हैं, पिस्टल में जानते हैं, ट्रिगर दबाना का मतलब क्या होता है? यस मैम। कोई चीज स्टार्ट कर देना, मतलब वहां तो यहाँ किसी पर को मतलब किक है। स्टार्ट होता है मैम, किक हाँ स्टार्ट। हाँ हाँ, आई थिंक सो। you can trigger a presentation, you can trigger a debate, मतलब to start. Yes ma'am. Okay ma'am, I'm continuing. Yeah. When UPA2 was in power, he could criticize anyone. Now an atmosphere of fear exists. What is the meaning of criticize? Criticize कर दिया मैम, वो मतलब against चला गया। किसी को against है ना मैम? निंदा करना, criticize करना। Yes ma'am. He mentioned the NDA government's lack of action against mob lynchings and BJP. What is mob lynching? Mob lynching मैम कोई action ना लेना। नहीं। So he mentioned the DNA government's lack of action against mob lynching and BJP MP Pragya Thakur's recent remarks on mob lynching। मतलब कि अगर कोई किसी भी वजह से किसी को अगर पब्लिक मिल करके मॉब लिंचिंग मतलब भीड़
एक उकसाई जाती है और किसी को पकड़ के उसकी जान ली जाती है। मतलब Yes, कोई जैसे कि अगर कोई पकड़ लिया कि कोई चोरी कर रहा था, कोई कुछ गलत काम कर रहा था, चोर भाग रहा है, तो उस चोर को पकड़ करके लोग क्या करते हैं, मार पीट कर उसकी जान ले लेते हैं। मॉब का मतलब होता है कि एक भीड़ जो कि एजिटेटेड भीड़ है, गुस्साई हुई एक भीड़, सड़कों पे देखोगे कहीं कुछ हो रहा है तो भीड़ जमा हो जाता है। और किसी चीज को जाने के बगैर कि क्यों जा रहा है, क्यों दौड़ रहा है, क्या चोरी किया है कि नहीं किया है, शक भी हो जाता है कि ये चोर है, तो सब उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उसको लिंच कर देते हैं, मतलब दे किल हिम। yes, ma'am. मॉब लिंचिंग। तो ये उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। ही मेंशन दैट एन इंडियन गवर्नमेंट लैक ऑफ एक्शन, कि जो मॉब लिंचिंग जो हो रही है उसके अगेंस्ट वो बोले थे कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। Yes, ma'am. पब्लिक कहाँ से अपने हाथ में कानून ले सकती है, और पूरी एक भीड़ वहां जुट जाती है और उसको पकड़ के उसकी जान ली जाती, तो अगर कोई डिफॉल्टर है भी तो उसके लिए कानून है ना। तो ये मॉब कहाँ से आ जाता है, मॉब किसी को कैसे लिंच कर देता है, कैसे किसी को पकड़ के। अब बहुत देखने को मिलता है। कोई अभी हाल ही में तो लास्ट नाइट somebody, एक ओल्ड मैन जा रहा था, एक ओल्ड मैन जा रहे थे ऑन स्कूटर, एक बस आके उनको धक्का दे के आगे बढ़ जाती है, हिट एंड रन। अब नेक्स्ट, और वो बस जब वापस रूट में जा रही थी तो उस ड्राइवर को लोग पकड़ के नीचे उतार के उसको मतलब मार पीट ये करना वो करना, दे डिड नॉट किल द पर्सन, लेकिन उसको पकड़ के अगर जान ले लेंगे तो आपको, आपके हाथ में तो कानून है नहीं ना, बिल्कुल। यू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। तो ये जो लोग बाग जो मिल बैठ करके और कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, इसको कहा जाता है मॉब लिंचिंग। और मॉब लिंचिंग जो हो रहा था इसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। हाँ, मेंशन किया था इंडिया गवर्नमेंट को मैम हाँ। इस चीज को लेके। हम्म। या मैम। And BJP MP Pragya Thakur's recent remarks on Nathuram God's to a room of India include veterans and top political leaders. The veteran industrialist, uh, sorry, actually, the veteran industrialist candidate remarks were well received by the critics of the incumbent government. नॉट गवर्नमेंट, Government, कौन गवर्नमेंट? incumbent, ma'am. इनकम्बेंट का मतलब बताओ। Ma'am, incumbent means जो एक गवर्नमेंट, sorry ma'am, I'm forgetting the meaning of government. भूल गए? Yes ma'am. somebody who occupies a prominent position, ठीक है, Yes एक ma'am. पर्टिकुलर पोजीशन और प्लेस, Uh, अथॉरिटी, जो अथॉरिटी में है। means ranking. यस सर। Okay ma'am. Rahul Bajaj and Bajaj family's wealth. Rahul Bajaj owns 10% stake in Bajaj Auto, 10% in Bajaj Finserv, and 24% of Bajaj Holding and Investment. He also owns a 2% stake in Bajaj Finance and 14% in home appliances. His net worth is estimated to be at $4.4 billion. According to Forbes, India's 100 richest people in 2019 list, the Bajaj family's net worth stands at $9.2 billion, and it is the 11th richest family in India. Thank you, ma'am. That's my presentation. Nice. So this was about Rahul Bajaj by Ritik Sharma. What did you learn from Rahul Bajaj? तुमने क्या उनके बारे में क्या समझा, क्या सीखा उनसे, उनके स्टोरी से? How were you inspired? Hello? किस तरह से आप इंस्पायर्ड हुए बताइए ऋतिक।
Hello. Ritik has gone away or what? No, ma'am. I missed. Okay. तो ऋतिक तुमने पहले कैमरा ऑन करो पहले. Yeah, ma'am. तो मेरा लैपटॉप में off है. चलिए, what did you learn from the story that you presented today right now? Ma'am, right now I have presented a story about Rahul Bajaj. I have learned how many struggles in life. हार नहीं माननी चाहिए बस. How many की how much? How much? Sorry. What is the difference between much and many? मैम मच बर्डन्स में आता है और मैनी मच तो मैम उसको मतलब मैनी इसको किसी काउंटेबल चीज को बोल सकते हैं मैम और हाँ. मच तो अनकाउंटेबल चीज को बोलते हैं. बेसिक तो तुमको आते ही है, लेकिन थोड़ा वोकैबुलरी में थोड़े कच्चे हो तो Yeah, उसको ठीक बिकॉज कर मैम लेना. 1 ईयर मेरा थोड़ा स्टॉप हो गया था पढ़ाई इसलिए. कोई बात Because नहीं, कोई फिर बात नहीं, कुछ स्टॉप हो गया था तो उसको फिर से रिकैप करो और कोई दिक्कत नहीं है. यस ठीक है, मैम. थैंक यू. चलो. एंड देयर वाज वन गर्ल हु प्रॉमिस्ड कि नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर दे दूंगी मैम. वो लड़की का नाम क्या है जो सिंगिंग वगैरह मेरे सामने रहती थी? व्हाट्स हर नेम? आई फॉरगॉट हर नेम. प्रिया. प्रिया. उन्होंने कहा था, वो आई भी सेंटर पे आई थी. तो सॉरी मैम, नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर दे दूंगी. वेयर इज शी? इन द क्लास? शी इज नॉट इन द क्लास. प्रिया तुम हो क्या? यस मैम. चलो, तुमको तो हम ढूंढ निकालेंगे कहीं भी. चलो, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन? राहुल बजाज. आज हमने सोचा था कि प्रपोजल स्टार्ट कर देंगे, लेकिन देयर आर सो मेनी पीपल इन योर क्लास हु हैव नॉट प्रेजेंटेड. मैंने कहा था, मैंने सोचा कि 2 दिन में पूरा कवर अप हो जाएगा. तुम लोगों ने इतने लंबे लंबे प्रेजेंटेशन दिए ना, 3-3 मिनट सबको देते तो 2 दिन में खत्म हो जाता. प्लीज मेक इट शॉर्ट, कंसाइज कर लिए, प्रिसाइज करिए. ठीक है, आपने 7th कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा है ना कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसाइज, प्रिसाइज. ठीक है, कम शब्दों में अधिक से अधिक कंटेंट आप दे दीजिए. ठीक है, instead of reading it from the content all the time, do not read from the content. Give me the main points of what you have understood, and it should be in your own words, right? All right. राहुल बजाज को बोले. हाँ ठीक है. Rahul Bajaj has been the president of the Confederation of India. मैंने फिर कहा ना, पढ़ो मत. तुमको क्या समझ में आए तुम वो बोलो. प्लीज डू नॉट रीड फ्रॉम योर फ्रॉम एनी टेक्स्ट. मैम राहुल बजाज एक प्रेसिडेंट थे इंडिया इंडस्ट्री के. और प्लीज स्पीक इंग्लिश. दिस इज अ बिजनेस इंग्लिश क्लास. हाउ कैन यू चूज योर ओन लैंग्वेज? मैं हिंदी में बोलूंगी. यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. नो, आपने 2-3-4 क्लासेस में ये लगातार लोग प्रेजेंट कर रहे हैं. जो किताब खोल के नहीं भी देखा होगा ना, उसको बहुत कंटेंट समझ में आ गया होगा. बिना देखे आप बोलिए. चलिए. मैम राहुल बजाज has president of India Industries and he. तो यही तुम्हारी तैयारी है? मैम लिख लिए लेकिन अब इंग्लिश में नहीं, थोड़ा कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम. डू नॉट रीड फ्रॉम एनी टेक्स्ट. मेन पॉइंट्स क्या है वो बताइए हमको आप. हिंदी में बोल सकते हैं. तो आपको फिर हम आपको बैठे हैं मार्क्स देने के लिए. अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं तो यू विल गेट अ स्ट्रेट 0. मैम उनका तो कुछ भी नहीं तुम बोल मैम सकते हो. राहुल हाँ, मैम हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऐसे इंग्लिश में हम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम आती थोड़ा है. सा हम नहीं जानते हैं. आपको जैसे भी आता है आप प्लीज ट्राई. अगर आज ट्राई नहीं करोगे तो कभी ट्राई नहीं कर पाओगे तुम. मैम Rahul Bajaj has been president of India Industries and he was appointment of the chairman of India. He was appointment. He was Yes. appointment होगा क्या? क्या होगा यहाँ पे?
चेयरमैन वो इंडिया के एयरलाइन का वो थे ना, एयरलाइन? एयरलाइन एयरलाइन कहाँ से आ गया इसमें भाई? नहीं एयरलाइन नहीं है। I am not going to give any chance now. I will not be giving you any more chances. And from the next class, I will be starting on what is the proposal. There are proposals. There are 4 kinds of proposals which you need to know. And then there is technical proposal, जो 3 type का होता है. So what is the proposal? What do you mean by the term proposal? Proposal का मतलब क्या समझते हैं आप? Anything which you write, it is a written document which you write or which you respond to किसी कंपनी में, कंपनी के बेनिफिट के लिए या अपने बेनिफिट के लिए पहल करना, ठीक है? समथिंग विच इज रिटन. तो 4 तरह का प्रपोजल्स होता है, सोलिसिटेड, अनसोलिसिटेड, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. मैं भी पढ़ा, मैं जस्ट आपको जनरली मैं बता रही हूँ. सोलिसिटेड प्रपोजल होता है जब कोई कंपनी डिमांड करती है, जैसे कि इस कंपनी में वैकेंसी है, तो देन देयर इज अ वैकेंसी. द कंपनी नीड्स, सबसे पहले तो प्रपोजल लिखने के लिए देयर हैज टू बी अ नीड होता है, तो प्रपोजल होता है. नीड है स्टाफ के लिए, द कंपनी एडवर्टाइजेस सम पोस्ट, तो एडवर्टाइजमेंट्स आता है, उसको देख करके आप रिस्पॉन्ड करते हैं. तो दिस टाइप ऑफ प्रपोजल इज सोलिसिटेड, मांगा गया है. कोई अगर इस लायक है तो प्लीज अप्लाई करिए, ठीक है? और दूसरा जो होता है वो अनसोलिसिटेड, मतलब मांगा नहीं गया है, आप पहल कर रहे हैं. आप वॉक इन कर कहीं जाते हैं, बोलते हैं क्या इस स्कूल में वैकेंसी है, इफ देयर इज एन वैकेंसी, आप पहल करते हैं. आप प्रपोजल देते हैं कि यू वांट टू स्टार्ट समथिंग. आप किसी स्कूल कॉलेज में कैंटीन खोलना चाहते हैं, आप ओजेटी का जॉब करना चाहते हैं किसी कंपनी में, आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो ये आपसे मांगा नहीं गया है लेकिन आप पहल करते हैं. यू प्रपोज. प्रपोजल कहाँ होता है? जहां पर नीड होता है तभी. तो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर कैंटीन की जरूरत है, यहाँ पर हम ओजेटी बन सकते हैं, तो हम हेल्प कर सकते हैं, कंपनी में भी किसी कोई काम कर सकते हैं. ऑन द जॉब ट्रेनर का पोस्ट होता है. आई कैन बिकम एन ओजेटी, आई कैन वर्क आफ्टर माई कॉलेज, क्लासेस के बाद मैं काम कर सकता हूँ, मैं इनिशिएटिव ले सकती हूँ. तो आप पहल कर रहे हैं, मांगा नहीं गया है. मांगा जाएगा तो इफ एनी स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन ओजेटी वर्क प्लीज रिस्पॉन्ड. ये क्या हो गया? ये सॉलिसिटेड हो गया, मांगा जा रहा है, लेकिन मांगा तो नहीं जा रहा है. तो आप अपने मन से प्रपोजल दे रहे हैं कि मुझे ये काम करना है. तो आपका प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड, कैन बी रिजेक्टेड, ठीक है? तो किसी भी चीज को बिजनेस के आगे बढ़ाने के लिए या पर्सनली ग्रोथ के लिए भी प्रपोजल दिया जाता है. द कंपनी नीड्स इट, द कंपनी विल एडवर्टाइज, the company Ma'am, will it's a type of presentation. presentation ये written होता है, ये एक written Yes, ma'am. document It is होता है. a type of written presentation, maybe. हाँ, no, it is not a presentation. Presentation अलग होता है, proposal, ठीक है? Proposal can be, proposals are always written, ठीक है? और ये आप कुछ देना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैंटीन खोलना है. आप देखने के यहाँ समझ में कैंटीन तो है, लेकिन हम कुछ फूड स्टॉल लगाना चाहते हैं. आपने देखा कि जो बच्चे बिना खाए चले आते हैं, हॉस्टल में खाना उस वक्त नहीं बना होता है, तो उससे क्या होता है? लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. So somebody can give a proposal to, I want to start something like food stalls or canteens in a college, so that सबको फायदा मिल जाए. तो इसका प्रपोजल आप दीजिएगा. तो इसी तरह से ये मांगा नहीं जा रहा है, लेकिन आप दे रहे हैं. दिस इज अनसोलिसिटेड. सोलिसिटेड मांगा गया, अनसोलिसिटेड नहीं मांगा गया. थर्ड आता है इंटरनल प्रपोजल विद इन द कंपनी.
जैसे हम सिमज में काम कर रहे हैं, आई कैन ऑल्सो गिव अ प्रपोजल टू टीच म्यूजिक। ठीक है, कि मुझे म्यूजिक पढ़ानी है, द टेक्निकल्स ऑफ म्यूजिक बतानी है, टेक्निकलिटीज ऑफ म्यूजिक बतानी है, आई वुड लाइक टू टेक अप म्यूजिक क्लासेस। तो मेरा प्रपोजल हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है एक्सेप्ट नहीं हो। तो हमको कहाँ, हमको क्या ये नीड लग रहा है, मतलब नीड है क्या? नीड तो बिल्कुल है। इसलिए कभी कुछ प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम पूरा मेस्ड अप हो जाता है, 2 दिन में सीख के बच्चे करते परफॉर्म करते हैं, तो ये प्रिया को पता है कि किस तरह से परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो अगर म्यूजिक क्लासेस रेगुलर लगाया जाए तो बच्चों को फायदा होगा। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो जाए कि हम एवरी फ्राइडे को हम म्यूजिक क्लास लेंगे। तो हम क्या क्या उसमें लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे। मेरा मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों हो, तो मैं अपने बारे में रिक्वायरमेंट लिखूंगी, बताएंगे। रिक्वायरमेंट बताएंगे। रिक्वायरमेंट ये है, नीड है आपके यहाँ, बिकॉज प्रोग्राम हमेशा होता रहता है और प्रोग्राम क्लिक नहीं करता है समझ का आजकल, इसलिए कि बच्चे उतना ध्यान देते नहीं है और 2 दिन Yes, सीख ma'am. करके वो नहीं कर पाता है बच्चा। तो व्हाट इज हैपनिंग, तो अपने बारे में हम क्या बताएंगे, हम किस तरह से सिखाएंगे। नीड तो है और ये फायदा होगा, तो हम कंपनी के फायदे के बारे में भी बात करेंगे, बच्चे के फायदे के बारे में भी बात करेंगे, isn't it? So this is going to be the benefit for the organization and of course benefit for the students also. So I will write, उस प्रपोजल में मैं क्या लिखूंगी, मुझे अपने बारे में लिखना है, कैसे मैं केपेबल हूँ, बस मैं लिख दूंगी कि मुझे म्यूजिक सिखाना है और कोई बिलीव थोड़ी करेगा। देयर हैज गॉट टू बी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ कि अगर आप कहीं से आपने प्रवीण कर रखा है तो उसको लगाना पड़ेगा, मेरा एक्सपीरियंस, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सिंगिंग, सो ऑल दीज थिंग्स आई विल हैव टू पुट डाउन। ठीक है, तो ये तो होगी बात इंटरनल प्रपोजल की। विद इन द कंपनी, एनी कंपनी, अगर आप कुछ नया कुछ करना चाहते हैं जो कि होना चाहिए और कंपनी में ये नहीं हो रहा है, यू कैन गिव अ प्रपोजल विद इन द कंपनी, दिस इज इंटरनल। और किसी बाहर का भी प्रपोजल आता है, तो कोई वर्कशॉप कराना है, कोई बाहर से, कोलकाता से या मुंबई से या कहीं से भी ऐसा हो सकता है कि आई वुड लाइक टू होल्ड वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स इन अ कंपनी। तो ये हो गया एक्सटर्नल, समथिंग विच इज डन एक्सटर्नली, कंपनी के बाहर। सो यू कम टू नो व्हाट इज सोलिसिटेड प्रपोजल, which is demanded, which is requested, which is asked. Then there is unsolicited, जो कि आप पहल कर, you take the initiative, you do not wait for somebody to ask you, but you give a proposal. I also can give a proposal to teach French in your to teach French, or proposal to teach spoken English classes. तो हम जान रहे डिमांड तो इसका है, और डिमांड है तभी नीड अराइज करता है, नीड है तो प्रपोजल एक्सेप्ट होने का चांसेस है ना। तो सोलिसिटेड, अनसोलिसिटेड, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट। इन द नेक्स्ट क्लास प्लीज रीड, आपके प्रपोजल जो आपके आपके मॉड्यूल में है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी जो मैंने बताया, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके फाइन, उसको पढ़ के आप आएंगे। एंड of course I will be giving 10 minutes time for your presentation, ताकि धीरे धीरे करके सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट कर लें। ठीक है, तो 10 मिनट टाइम देंगे, मतलब कि आई विल गिव 3 persons for 10 minutes, I will be allowing them to make their presentation. ठीक है, चलो। Yes, ma'am. Ma'am, hello. Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, as I presented today presentation, so you can got my weakness. Can you share me what my